हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉर्टिसोल के इटियोलॉजी के बारे में। मोस्ट कॉमनली एक्सोजेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड से होता है एंड प्राइमरी एडिनल एडिनोमा, एसीटीएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, ओके, पैरानियोप्लास्टिक सिक्रेशन, इन सब की वजह से वी गेट hypercortisolism, which is Cushing syndrome. In this video, we are going to study about the effect of cortisol in Cushing's, in different metabolism and in different processes, how Cushing's affect the metabolism. So we have to understand कि liver होता है और extra hepatic tissue like muscles होती हैं. So cortisol is mainly a proteolytic enzyme, but you have to understand it is proteolytic anabolic in liver and catabolic in muscles and extra hepatic tissue. Okay, so ये एक basic concept है कि in the liver it will increase the synthesis, it will increase the deposition of proteins, and in the extra hepatic tissue like muscles it will increase the catabolism of the muscles. Okay, so इससे क्या होगा, muscles में क्या होगा, we will see severe muscle wasting. Okay, or it can also cause proximal myopathy. Okay, so इससे मसल से प्रोटीन निकल के it is going to the liver, and that's why it is anabolic for liver and catabolic for muscles. ये okay, so amino acid uptake in extra hepatic tissue. amino acid uptake हो गया यहाँ से, मेनली अमाइनो एसिड कौन सा जाता है, एलेनिन. सो इससे हमको आइडिया मिल गया कि ब्लड में एलेनिन इज हाई, ऑफ कोर्स. ओके, इसमें सिंथेसिस और कोलेजन सिंथेसिस कम हो गया, प्रोटीन एंड कोलेजन सिंथेसिस कम हो गया, सिंथेसिस कम हो गया. तो उससे क्या होगा, वी हैव सीन के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राया आते हैं, दैट आर बिकॉज ऑफ डिक्रीज कोलेजन सिंथेसिस. तो वे आप अभी तक हमने 3 पॉइंट देख लिए हैं. फर्स्ट कि वेस्टिंग होगी, प्रॉक्सिमल मायोपैथी होगी, साथ में वीकनेस भी हो सकती है. यस. देन सेकंड पॉइंट है कि प्रोटीन और कोलेजन सिंथेसिस कम हो जाएगा, उसकी वजह से ट्राई हो जाएंगी और बोन ग्रोथ भी अफेक्ट हो जाएगी. दिस विल कॉज ऑस्टियोपोरोसिस. ओके, वन थर्ड थिंग कि जो अमाइनो एसिड्स हैं दे विल बी टेकन आउट फ्रॉम द मसल्स एंड दे विल बी गिवन आउट टू द लिवर. मेनली कौन सा अमाइनो एसिड, एलेनिन. ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाएगी. तो मेन 4 पॉइंट्स थे अपने पढ़ लिए. ओके, इट इज़ मोस्टली अ प्रोटोलाइटिक एंजाइम, anabolic in the liver and catabolic in the muscle and extra hepatic tissue. Okay, extra hepatic tissue या muscle से amino acid will be taken and this will cause increased concentration of alanine in the blood. Second thing कि alanine का concentration बढ़ जाएगा because it's taken out from the muscles. is gluconeogenesis will be increased as alanine is a substrate. You will get the PDF of this. I will arrange it properly and then I will give it to you. Okay, so next, fat. On the fat metabolism, what happens? So mainly what happens is lipolysis. The fat that is present already is lysed and minimally happens. That will cause increased free fatty acids. This will cause redistribution of fat. And that will cause the characteristic buffalo hump and moon faces. So साइड बाय साइड हम उसके क्लिनिकल फीचर्स और साइंस भी पढ़ते जा रहे हैं. जैसे कि स्ट्राया देखा हमने, पर्पलिश स्ट्राया जो होते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज प्रोटीन एंड कोलेजन सिंथेसिस. अब फैट में देखा तो buffalo hump और moon faces का, if there is lipolysis then of course if FFA is increasing, triglyceride will also be increasing. So these are two things that happen. Very simple actually. Fat is done, I think. Then we go upon carbohydrate metabolism. Now we have to understand कि hepatic glucose output is increased. मतलब gluconeogenesis is happening
Why? We studied before, because of alanine. In the liver, what is happening? Increased gluconeogenesis because of alanine, because free fatty acids are increased, and because of increased glycogenolysis. That is why we said कि cortisol is a diabetogenic hormone. Okay, so whatever happens in diabetes, जो भी diabetes में होता है सब cortisol करवाएगा. ओके, सो ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाएगा, फ्री फैटी एसिड्स बढ़ गए हैं तो उससे भी इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस विल कॉज इंक्रीज ग्लूकोज. आई थिंक वी अंडरस्टैंड दैट. ओके, it will also cause increased insulin resistance as happens in diabetes. Okay, so it will cause a diabetogenic state. Okay, so I think we are done on the protein, on the carbohydrate, and on the fat metabolism. Now mineralocorticoid action, we know that it increases pp, it decreases potassium, and it causes acidosis. So पहले ही पढ़ा था हमने hypertension, hypokalemia and acidosis. ये एक ट्राइड है, ये पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. Now cortisol induced psychosis, ये भी होता है because it crosses the cortisol, the increased cortisol, not normal cortisol, crosses blood brain barrier. Okay, so इससे क्या होगा कि mood disturbances, irritability, depression. Okay, so this will happen. Now since cortisol has some action like sex steroid also, so it will cause in the female hirsutism and increased acne. Okay, so because increased adrenal androgen. Okay, so I think we are done with the effects of cortisol on the metabolism. Okay, so protein we have studied, fat we have studied, carbohydrate metabolism we have studied, mineralocorticoid action we have studied, cortisol induced psychosis, and hirsutism. These are the